Hello guys and welcome back to Exercise Academy. So we'll be studying about the gluconeogenesis, right? So in the previous lecture we discussed about like how gluconeogenesis is taking place. We also discussed about the three different steps, which is totally different from the glycolysis, right? So keeping that thing in mind, now what we are going to discuss is today the substrates which can be used for gluconeogenesis. It means apart from glucose or the fructose things, what else can be used as a substrate from which you can make or from which you can synthesize glucose? Okay. The first thing about the lactate. So, as we know that under anaerobic condition, pyruvate can be converted to lactate, and the name of the enzyme is lactate dehydrogenase, right? So, from lactate, if we could go back and synthesize glucose, that is the substrates of gluconeogenesis. Okay. Now, so lactate is released by RBCs and other cells that lack mitochondria during low oxygen concentration. So during exercise, lactate is released by skeletal muscles. The lactate is converted to pyruvate and subsequently into glucose by gluconeogenesis, and this is known as Cori cycle. Okay, so this already we have discussed. Now, the second substrate can be glycerol. So, abhi glycerol kaise hoga? In adipose tissue, the stored fat is in the form of TAG, that is triacyl glycerol. Now, this TAG can yield glycerol and fatty acids upon metabolism. Okay? So, this glycerol is transported to the liver, converted to glycerol 3-phosphate by glycerol kinase. See guys, look at the figure. Glycerol 3-phosphate. So, enzyme आपका क्या हो गया? Glycerol kinase, adding the phosphate group. Okay. Now, oxidation of glycerol 3-phosphate to form DHAP. What is DHAP? Dihydroxyacetone phosphate. और ये हमें कहाँ मिलता है? This is found in the as part of the glycolysis, guys. है ना? Remember? So DHAP. Yes. So DHAP is in equilibrium with glyceraldehyde 3-phosphate. Right? Your enzyme is there aldolase. Sorry, triose isophosphate. So over there, triose phosphate isomerase, sorry. So DHAP and glyceraldehyde 3-phosphate is there. Now from here back to aldolase will give you what? Fructose 1,6-bisphosphate. Remember? एक बार आपके पास वो मिल गया, then you can go back to glucose synthesis. ठीक है? So now just remember, glycerol से आप कैसे the material what you get is actually DHAP. So once you have got DHAP, this can enter the gluconeogenesis. So glycerol 3-phosphate means again kinase is there. So guys, over here what had happened, you can see that ATP is being used. Okay? And then oxidation. So over here NAD plus is there, and what you got is DHAP. Okay, so this is clear, like how lactate and glycerol can be used for the gluconeogenesis. Okay? Now these are the list of the amino acids which can form glucose. See, and these are known as the glucogenic. They are called as the glucogenic amino acid. Remember in the previous lecture, I was saying that there are certain glucogenic amino acids and there are certain ketogenic. जो आपका ये ketones बनाएगा, ठीक है? So here we are talking about the glucogenic amino acids. Okay. See over here, arginine, glutamate, glutamine, histidine, fluorine. So they all are having amino group. So ये जो है आपका keto glutarate बना रहे हैं. But we also know that keto ये आपका क्या है? Krebs cycle है, right? Okay. So you can see what all amino acids can form the intermediates: leucine, lysine, phenylalanine, tryptophan, tyrosine, acetoacetyl-CoA, which forms your acetyl-CoA. acetyl-CoA डायरेक्टली आपको isoleucine, leucine, tryptophan से भी मिल सकता है, ठीक है? Now आपको मालूम है acetyl-CoA से हमें pyruvate नहीं मिलता है, so क्या होगा? वो आपका oxaloacetate, malate and वो सारे conversions होंगे, ठीक है? दूसरा तरीका क्या हो गया? अगर आपका citrate बन रहा है या alpha ketoglutarate बन रहा है, so this can also end the Krebs cycle. It will go into the conversion of succinyl-CoA, fumarate, oxaloacetate. Then oxaloacetate, we know that it can form glucose कैसे? Oxaloacetate है, फिर malate है, then again it will convert back to oxaloacetate, जो कि हमने shuttle पढ़ा था, malate shuttle. Then it will form phosphoenol pyruvate and finally यहाँ पे आपको gluconeogenesis. ठीक है? So इसके लिए आप what you can do is you can make small acronyms by which you can remember what all the substrates can be formed. ठीक है? Well, इसमें टेंशन की बात नहीं है because nobody is going to ask you all this. What you can do is
आप सिर्फ इतना याद रख लो, ऑक्सैलो एसीटेट का, अल्फा कीटोग्लूटारेट का, पायरुवेट एंड एसिटिल कोए, सिर्फ इतना भी याद कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके गाइस, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। मेनली if you guys are like checking the previous year's question paper, then you can see that एसिटिल कोए एंड पायरुवेट का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। So these are the important ones which you can remember for your exam. Okay. So moving on. Now the glucose alanine cycle. So now we need to talk about the alanine also over here. So alanine is formed from the pyruvate in the muscles. Alanine is formed from pyruvate in the muscles. तो alanine क्या है? alanine आपका amino acids है। तो protein degradation जो होगा या प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो होगा वो आपका मसल से होगा। सो रिमेम्बर गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो सबसे पहले आपका ग्लाइकोजन फैट, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो रहता है वो यूज होगा, उसके बाद आपका फैट आता है, एंड एट द एंड में लास्ट में आपका मसल्स आता है, ठीक है। तो लास्ट होगा जहाँ पे मसल से जितना भी आपका जो एनर्जी रहेगा दैट कैन बी यूटिलाइज। So during starvation, it is transported to the liver. Alanine is reconverted to pyruvate by alanine transaminase in the liver. अभी देखो क्या हो रहा है, alanine जो है आपका pyruvate में वापस बनता है। एंजाइम कौन सा हो गया आपका? alanine transaminase, ठीक है। ये सब कहाँ पे हो रहा है? आपका लिवर में। Eventually, pyruvate will go for your glucose synthesis. ठीक है। अभी पायरुवेट से ग्लूकोज कैसे बन रहा है ये हमें मालूम पड़ गया है, राइट, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। नाउ द ग्लूकोज अलानिन साइकिल इज यूज्ड टू ट्रांसफर एमिनो नाइट्रोजन टू द लिवर of all the amino acids that can be converted to glycolytic intermediates. Alanine is the most important amino acid. So अभी हमने previous slide में देखा ही कौन कौन सी जो amino group वाले हैं जो आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसमें से भी आपका alanine मेन हो गया। So when exercising, muscle produces large quantities of pyruvate, and some of these molecules are converted to alanine by transamination reaction involving glutamate. अभी आप देखोगे पीछे हमने glutamate भी डिस्कस किया था along with the glutamate, ठीक है। So after it has been transported to the liver, alanine is reconverted to pyruvate and then to glucose, ठीक है। तो अगर मैं ग्लूकोज अलानिन साइकिल की बात करूं, so what we are going to talk about over here is that मसल में आपका अलानिन बना, ठीक है। Now this needs to be transported to the liver, जहाँ पे वो पायरुवेट के फॉर्म में जाएगा, ओके। एंड वहां जाके अलानिन जो है आपका वापस पायरुवेट बन गया, और पायरुवेट जो है आपका ग्लूकोज बन गया। तो इन शॉर्ट ग्लूकोज सिंथेसिस कहाँ हो रहा है आपका? yes Pallavi, where it is happening? Liver. Yes, very good, it is happening in the liver, but the substrate for your glucose synthesis to happen in the liver, it is being given by the alanine from the muscles, ठीक है। तो ये आपका सबस्ट्रेट हो गया यहाँ पे, ओके, एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका लिवर में बनता है। क्लियर गाइस, ये पूरा साइकिल आपको क्लियर हो गया, द ग्लूकोज अलानिन साइकिल? यस मैम। यस मैम। दिस इज द सेम थिंग जस्ट नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द डायग्राम फॉर्म, ओके। सो नाउ फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट द डायग्राम, द एक्सप्लेनेशन? From muscle. Yes, very good. So from muscle you need to start. तो आपके पास मसल्स हो गए, ठीक है। मसल प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, इसमें भी कौन कौन से एमिनो एसिड्स विच इज हैविंग आपका एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो क्या मिला हमें? ग्लूटामेट, अलानिन और ये अलानिन ट्रांसमिनेज जो भी आपके एंजाइम्स हैं। फाइनली अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जब आपको मिलता है, सो यू नो दैट इट कैन एंटर योर टीसीए साइकिल, एंड हमें पता है टीसीए साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट बन के इट कैन गो एंड फॉर्म दी ग्लूकोज। ये आपको ये पाथ क्लियर है? दिस पाथ इज क्लियर? यस मैम। है ना? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? along with the alpha ketoglutarate your alanine is also formed, ठीक है। So this alanine is taken from the muscle, it goes into the blood system, from the blood system it will go to the liver, and with the help of the alanine transaminase what will happen, आपका alanine जो है अंदर जाएगा, glutamate pyruvate बनेगा, pyruvate से finally आपको ग्लूकोज बनेगा। अब ये ग्लूकोज किस लिए चाहिए? So that your muscles can contract and relax and do the function, ठीक है। So in short अभी हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं, it's just that every cell, every respiring tissues and cell can only function if they have got the glucose. क्यों? Because glucose under glycolysis will give you a large amount of ATP, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एक सवाल पूछती हूँ,
ऑलरेडी ग्लूकोज बनाने के लिए ये कन्वर्शन में अलानिन हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट हो गया, या अगर हमारे पास दूसरा कोई सबस्ट्रेट है, वी आर ऑलवेज यूजिंग एटीपी। फिर एट द एंड में हम एटीपी ही बना रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ऑलरेडी जो यूज है उसको यूज कर लें, है ना। व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा कर रहे हैं हम? ऑलरेडी एटीपी लगा के हम एट द एंड में एटीपी ही बना रहे हैं। क्यों हम फिर इतना साइकिल पढ़ रहे हैं? क्यों इतना हमारा शरीर कष्ट उठा रहा है? सो कैन यू गिव मी द आंसर? Ma'am, if we use the remain ATP, it will not exist, no, ma'am. Yes, that is also one reason. Good. And see, it's like you know, how to say, it's like your share bazaar type, you know. You give 2 ATP, but once you get the glucose, right, ग्लूकोज से आपको 2 ATP मिल जाएगा, बट वॉट एवर द प्रोडक्ट पायरुवेट हो गया या टीसी साइकिल में एंटर करेगा, एट द एंड फ्रॉम 1 ग्लूकोज यू आर गोइंग टू गेट दी 30 ATP, है ना। तो अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो सिर्फ 2 ATP, बट बदले में आपको 30 ATP मिल रहा है, सो इट इज अ गेन, राइट। एंड दैट्स व्हाई हमारा सेल हो गया, टिश्यू हो गया, वो इतनी मेहनत करता है। एंड प्लस सी, muscles cannot function if they just have the amino acids and all, because अगर आपके blood system में glucose नहीं है, it cannot function. It needs glucose only. Let them have alanine, let them have high concentration of alanine, but it cannot use alanine for the ATP generation. So they put around 1-2 ATPs to convert alanine into pyruvate or glucose, so that they can take the glucose and function. अभी इसमें भी एक चीज हमेशा आपको याद रखना होगा, कोई भी शरीर का पार्ट जो है, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ योर बॉडी, द मेन target is to keep your body alive. And in that also, which is the main center of your body? Heart. Brain. It is the brain. Okay. Brain. So it is the brain. Of course, heart is also important, but for everything, brain is very important, because brain is taking 40% of glucose of the total entire body. ठीक है, तो उसको रखने के लिए हमेशा आपको ग्लूकोज का सप्लाई रखना ही होगा। सो मेन फोकस क्या हो जाता है? सी, ब्लड में हमेशा ही आपका ग्लूकोज एंड ये सब रहेगा, सो डेफिनेटली द हार्ट इज गोना गेट इट्स ग्लूकोज एंड इवेंचुअली द एटीपी। बट व्हाट अबाउट द ब्रेन? ओनली सोर्स क्या है कि जब तक ब्लड वहां पे सप्लाई नहीं करेगा ग्लूकोज, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। Whereas in the case of heart also, you have got those cardiac muscles, they have their own proteins, they have their own amino acids, they can convert them into glucose and you know they can use it. But what about brain? The only source is the blood supply, glucose, ठीक है। तो इसलिए मेन फंक्शन क्या रहता है आपका? ब्रेन हमेशा एक्टिव रखना है। एंड दैट्स व्हाई पीपल आल्सो से ना, इफ इट इज ब्रेन डेड, देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग द बॉडी अलाइव, राइट? इट इज ऑफ नो यूज देयर। ऑफ कोर्स हार्ट इज आल्सो नॉट देयर, तो भी कोई मतलब का नहीं है। या like in medical terms they say na, see, if there is no heart means of course the patient is dead, okay, but each organ and every part of the body is also dead. But if it is only brain which is dead, but rest of the body parts can be used, right? So from one life you can give so many lives to the other people. So that's how the policy is. But that's there outside of India में भी काफी लोगों ने organ donation शुरू कर दिया है, like they get their name registered, they give their contacts and everything, but still many people are there that who thinks that like when someone dies means उसके साथ सब कुछ जाना चाहिए, so that they get you know what nirvana or whatever moksha in the next janma or something like that is, right? तो कोई पार्ट अगर धरती पे रह जाएगा, you know many people believes are there like that. So depends like how your culture is there. So बाहर तो if you're an organ donor then you can't think of it, right? Because you are going to give your parts and वहाँ पे क्या वो legal हो गया है. So your hospital doctors, they can take the part of your body if you are brain dead or if you are dead. Okay. So each organ has got its lifespan. Once you are dead, each organ will start failing, right? So within that 2 hours or 4 hours of your death, the organ should be harvested. Anyways, वो तो बहुत दूर की कहानी हो गई है, and it's completely your choice to be an organ donor or not. Okay. So this is the cycle. Now one more thing, कि जब भी आपका ग्लूटामेट, अलानिन ग्लूटामेट बन रहा है,
Sidewise, you have got the glutamate alpha ketoglutarate also, right? So alpha ketoglutarate glutamate बना, ammonia मिला, वापस यूरिया. तो यहाँ पे हम next हम जब आगे पढ़ेंगे, so we need to talk about the urea cycle. ठीक है? Now why urea cycle? Because this is the only way by which you can remove the toxic waste from your body. Okay? So जो भी आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं, जो भी आपका ड्रग डिटॉक्सिफाई होता है, एंड यू नो दैट इन द लिवर ओनली ऑल द ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस. अल्कोहल हो गया या पैरासिटामोल हो गया, जब तक वो लिवर में जाके ब्रेक नहीं होता है तब तक आपके शरीर में वो रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है? So there are few medicine which gets dissolved in the body, it goes to the blood system and goes to the different parts, but there are certain metabolites which goes into the liver, they get detoxify over there, या जो भी metabolites बनते हैं उसके बाद ही it goes for the recycling या जो भी रहता है आपका. The liver is made for your all detoxification, and urea is the only way by which you can remove these toxic materials from your body. Okay, clear है ये cycle? थोड़ा सा ये साइकिल और कॉम्प्लिकेटेड है गाइस. अब यहाँ पे आप ये देखो, ये एक पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है, और यहाँ से अटैच आपको फोर्थ पार्ट है. सो देयर आर 4 साइकिल व्हिच इज गोइंग ऑन टुगेदर. ठीक है? सो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन द ब्लड स्ट्रीम यू हैव गॉट द पायरुवेट. ओके, यू हैव गॉट द पायरुवेट. तो पायरुवेट है, तो ऑफ कोर्स इट कैन गो डायरेक्टली टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन. दैट्स So as I was saying, so we have got the 4 different cycles which are linked together. Okay, so in further lectures we are going to study all these cycles separately also, and you need to understand like how they are well connected to each other. Okay. Okay. Now the application. So the glucose alanine cycle serves several purposes. So first of all, in the recycling of the keto acids between the muscle and liver. तो कौन से keto acids की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट. ठीक है? सो यू नो दैट जब आपका ग्लूटामेट है, पायरुवेट है, अलानिन ट्रांस एमिनेज, तो क्या हो रहा है एक्चुअली एमिनो ग्रुप आपका ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है? ग्लूटामेट से एमिनो ग्रुप लेके आपने पायरुवेट में ट्रांसफर किया. सो व्हाट हैपेंस, योर पायरुवेट बिकम्स अलानिन. ठीक है? एंड ग्लूटामेट विल बिकम योर अल्फा कीटोग्लूटारेट. इतना क्लियर है? सेम एंजाइम विल डू द रिवर्स. अलानिन से आपका एमिनो ग्रुप लेके उसको अल्फा कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफर कर देगा, तो आपको ये ग्लूटामेट बन जाएगा और ये आपको पायरुवेट मिल जाएगा. ठीक है? तो इतना क्लियर है अलानिन ट्रांस एमिनेज का फंक्शन. इट इज जस्ट ट्रांसफरिंग द एमिनो ग्रुप. यस गाइस, क्लियर है? Yes, ma'am. Now, so it is a mechanism for transporting amino nitrogen to the liver, because muscle is unable to synthesize urea from amino nitrogen, so the amino nitrogen is transported to the liver for the urea synthesis. So once alanine reaches the liver, it is converted to pyruvate. The amino nitrogen of alanine is then incorporated into the urea or transferred to the other alpha keto acids to restore the amino acid balance in the liver. अभी क्या है, जब हमारे पास अल्फा कीटो एसिड बहुत है एंड एवरीथिंग इज लाइक इनसफिशिएंट, तो हमें वेस्ट हटाना है, तो हम यूरिया के फॉर्म में निकाल देंगे. सो यूरिया का फॉर्मूला क्या है आपका? If you see, it removes 2 groups of your amino group. Okay, so this is the formula of your urea. Okay. Now, gluconeogenesis का regulation. So, like any other metabolic pathways, the gluconeogenesis is regulated. So, the parameters that affect the gluconeogenesis rate are, of course, the substrate availability, allosteric effector, and hormone. Okay. So, this gluconeogenesis is stimulated by high concentration of lactate, glycerol, and amino acids. So, guys, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास शुगर कम है, but I have got lactate, glycerol, amino acids high, right? So, muscle protein आपके पास high हो गया, fat आपके पास high हो गया, right? So, what you're going to do? You are going to synthesize glucose. A high fat diet, starvation, and prolonged fasting can make large quantities of these molecules available. So the 4 key enzymes in gluconeogenesis are, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कल के लेक्चर में, pyruvate carboxylase, carboxykinase, fructose 1,6-bisphosphatase, and glucose 6-phosphatase, right? So these are the enzymes which are responsible for the irreversible step of your glycolysis, right? So they are affected by varying degrees of allosteric modulators. अब कौन से हैं वो? Fructose 1,6-bisphosphatase is activated by citrate, inhibited by AMP, and fructose 2,6-bisphosphate.
कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? यस, यस मैम। है ना? सो अभी कैसे है फ्रक्टोज 1,6 Yes, ma'am. बिस्फोस्फेटेज, इसका क्या काम है? रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप मैम। हाँ, तो ये क्या करेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को क्या बनाएगा? फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना? Now it is activated by citrate. It means you have got the substrate more. आपका Krebs cycle का substrate ज्यादा है, ठीक है? Inhibited by AMP. AMP inhibit करता है, क्यों? Because AMP अगर आपका ज्यादा है, it means what? You don't have ATP, है ना? AMP अगर ज्यादा है, then it means ATP आपका कम है ना? तो क्या होगा? तो आपका ग्लूकोसिंथेसिस होता है, और अगर आपका एएमपी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉरी कम है या जो भी है, कम या ज्यादा है, सी फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज को इनहिबिट कर रहा है एएमपी. सो व्हाट डज इट मीन? लेट मी मेक इट क्लियर. फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज का काम है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट करना. इट इज मेकिंग ग्लूकोज, है ना? व्हाट डज इट मीन? Okay, so as I was saying, fructose 1,6 बिस्फोस्फेटेज क्या करता है? तो fructose 1,6 बिस्फोस्फेट को fructose 6 फॉस्फेट करते हैं, ठीक है? So it means it is going towards glucose synthesis, है ना? Now you tell me, if AMP is low, what is going to do, what this concentration is going to do? 1,6 bisphosphatase उसको वो एक्टिवेट करेगा, इनहिबिट करेगा. it will inhibit. क्यों? See, अगर मेरे पास AMP कम है, एएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इनहिबिट करेगा, क्योंकि हाँ. एटीपी रिक्वायरिंग मतलब स्टेप है. हाँ, अभी क्लियर है ना? तो कम है तो मतलब वो Yes, हेल्प ma'am. करेगा कि कम है हाँ और तो वो ग्लूकोज help. बना. ओके, गुड. चलो अभी क्लियर है ना? सी दैट्स व्हाई आई सेड ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में. ये हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट? फ्रक्टोज किसका था ये? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. प्रीवियस क्लास में कल. हाँ, प्रीवियस क्लास में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से किया था. ओके, सिमिलरली pyruvate carboxylase is activated by acetyl-CoA, which is produced during the fatty acid oxidation, and acetyl-CoA concentration is high during starvation. क्यों starvation में high क्यों हो जाता है आपका acetyl-CoA? Because आपका फैट जो है वो स्टार्ट हो जाता है डिग्रेड होना. और आपको मालूम है if one fatty acid से अगर वो 16 कार्बन है या 18 कार्बन है, तो यहाँ से आपको 8 acetyl-CoA मिलेंगे, यहाँ से आपको 9 acetyl-CoA मिलेंगे, ठीक है? तो जो भी कार्बन आइटम है, सॉरी कार्बन फैटी एसिड है, उतने का डिवाइड बाय 2 कर दो, बिकॉज योर acetyl-CoA is made up of 2 carbon. So that's why whenever there is a fatty acid oxidation, the concentration of acetyl-CoA is going to be high, which is especially happening in the case of starvation. Okay, clear? Okay, so now coming to the hormonal regulation. So glucagon hormone decreases the synthesis of fructose 2,6 bisphosphate, and fructose 2,6 bisphosphate is a positive allosteric regulator of PFK1. So if PFK1 is inhibited, inhibition results in the less synthesis of fructose 1,6 bisphosphatase and eventually less synthesis of PEP. Hence, PEP is no longer available for glycolytic enzyme pyruvate kinase. So the activity of pyruvate kinase is inhibited. कितना समझ में आया guys? एक बार फिर से पढ़ के देखो इसको. Okay, Chandni, can you explain then? Ma'am, can you repeat the question, ma'am? Voice break ho, ma'am. Okay. See, the thing is, like you can see in the screen, right? Hormonal regulation, how glucagon is activating.
तो यहाँ पे देखो, ग्लूकागॉन हार्मोन डिक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट। नाउ फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट क्या करता है? इट अप रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है? It converts your fructose 6 phosphate to your fructose 1,6 bisphosphate, 1,6 bisphosphate, है ना? सो अगर आपका ग्लूकागॉन डिक्रीज हो रहा है, ग्लूकागॉन डिक्रीज हो रहा है, तो आपका PFK1 इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज, यानी कि इनहिबिटेड। ठीक है, क्लियर? इन शॉर्ट क्या हो रहा है? आपका PFK1 कम Yes, होगा, ma'am. सो व्हाट विल हैपन? PFK काम नहीं करेगा, तो एट द एंड आपका PEP फॉस्फेनोल पायरुवेट भी कम हो जाएगा, तो आपका पायरुवेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज, इफ ग्लूकागॉन हार्मोन डिक्रीजेस, योर पायरुवेट इज डिक्रीज। ठीक है, इतना याद रखो। अब पायरुवेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसके बीच में जितने भी आपके एंजाइम्स आएंगे वो सबकी एक्टिविटी आपकी कम होगी। ठीक है, पायरुवेट काइनेज हो गया, PFK1 हो गया। नाउ cortisol hormone increases the expression of gluconeogenic enzymes. Again, gluconeogenic enzymes को एक्टिवेट कर रहा है, तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस आपका इनहिबिट हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका एक्टिवेट हो रहा है। कौन सा? कॉर्टिसोल। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज हमें कहाँ लगता है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करने में। ठीक है, Yes, ma'am. तो इंसुलिन अगर बढ़ रहा है तो इट मींस ग्लाइकोलिसिस फेवर हो रहा है, और ग्लाइकोलिसिस फेवर हो रहा है तो इट मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट हो रहा है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ग्लूकागॉन ही है जो अगर आपको देन इट्स एक्शन इज गोइंग टू लीड टू द सिंथेसिस ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स, पेप कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसका मतलब क्या? ये एंजाइम्स कहाँ लगते हैं? हमें कहाँ लगते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस में लगते हैं, राइट? तो ग्लूकागॉन इन शॉर्ट, पायरुवेट कम हो रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस बंद हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट हो रहा है। सिंपल। अभी आपको ऐसे याद रखना Yes, है, ma'am. ग्लूकागॉन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये आपका ग्लाइकोलिसिस बंद करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट करता है। सिर्फ एक इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको ग्लाइकोलिसिस के लिए फेवर करता है, ओके, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट करता है। बस इन शॉर्ट इतना याद रखना है। Yes, इसके ma'am. बीच में जितने भी आपके एंजाइम्स आएंगे, अकॉर्डिंगली यू नीड टू अंडरस्टैंड whether it is glycolytic enzymes or it is gluconeogenic enzymes. Okay? Yeah. Okay, ma'am. Wow. So guys, thank you for listening to the lecture. अभी तो कोई डाउट आया आपको? Thank you, ma'am. कोई डाउट है No, ma'am. No, ma'am. ना? ओके, मतलब मैंने 1 सेकंड